It is one of the most entertaining script I have read in the recent time. And Saurabh, the man of the hour, he's the founder of Scriptors. मतलब मैंने खुद ऐसे था कि कितने स्क्रिप्ट ऐसे लिखी है, मैंने कहा अब हिम्मत नहीं है लिख के पिच करने का। हाँ, लेकिन राइटिंग के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ राइटिंग इज नॉट अ स्टेबल जॉब. Saurabh has written the well-known film Dr. G. मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिखा है राइटर ऑफ डॉक्टर जी एंड 10 नेवर मेड फिल्म्स. आपकी 4 फिल्में मार्केट में अटकी नहीं पड़ी हैं तो आप राइटर नहीं. 90% of the producers will reject this. We have to fight. For writing a biopic, it's very important to find that thread. उस छोटे शहर में एक लड़की का थप्पड़ मार देना अपने पति को सबके सामने is a rebel. मार्केट का 1% कौन है जिसको आप जानते हो. और क्या टेक अवे है विद द टाइटल इटसेल्फ, अर्जुन बेवकूफ, बट अर्जुन बेवकूफ नहीं है. Hi, how are you doing? I'm good. Very well. So everyone here, Saurabh is the man of the hour for today. He's the one. We'll be learning more about scripters today. We'll also be learning more about Saurabh himself. And before we begin, before you start with anything, I would just like to give a brief introduction of yours and scripters to everyone to just get the ball rolling. So scripters, what the platform is, that it helps the writers, it supports the writers, and it is made by a community of writers. But let us understand what exactly scripters is. Scripters is a collective community of writers and filmmakers where they develop concepts, write scripts for films and shows. From ideation to screenplay writing to doctoring to pitching, they provide all the necessary support and guidance. So Scripters is the one and only organization that is run by writers, which ensures that talented writers and their work get their dues. And Saurabh, the man of the hour, he's the founder of Scripters, and he has a wonderful journey, which I read about quite recently, from being a graduate of New York Film Academy. Saurabh is also a dentist who turned into radio jockey and then screenwriter. And after assisting in films like Satyagrah, he wrote and directed a short film named Ek in 2015, which also got selected and won in many international film festivals like MAMI, Vancouver Asian Film Festival, and DC Independent Film Festival. Saurabh has written the well-known film Dr. G, which stars Ayushmann Khurrana. And you are also currently working on another feature film for Jungly Pictures, a socio-economic thriller alongside a period political thriller for Sunshine Pictures with Vipul Shah. So everyone, please welcome Saurabh with a huge round of applause, digital round of applause. Thank you. So, I was dating my wife at that particular point of time. She was doing gynecology. When I went to meet her in the break of my film school, there was this one guy who was there in the batch. There was a batch of 8 girls, 1 boy, and that 1 boy is the only male in the whole department. He was the only male between all the patients, all the batchmates, and even the professor. Everyone is female. And that's quite a role reversal. That kind of like ignited something inside me. I was like, this is a very interesting thing. We always talk about females in the men world, what is men in the female world, and how that will change him or his perspective towards the life. That's where the idea got inculcated. So understanding that make me realize, and a lot of other people who are working with me, is that it's not an easy for a new writer. I have written Dr. G का पहला draft in 2013 का end, and पहली बार किसी ने पढ़ा था वो थी 2016. It got accepted in 2016. 3 years it took me just to take the script around. So this process of knowing people is very long, and new people doesn't know from where to start. And that is where the idea of scripters arises. Okay, why don't we have a system in place where the new writers can come, can send their scripts and material, and they can get an honest feedback, the honest support, and the honest way who are the people who are actually believing in their story and them. अब लोग बोले कि भाई agencies भी तो हैं, why there is a need of scripters? When I was trying to approach the agencies, they were not even responding. So नए writer के लिए agencies respond नहीं करती. And the day Dr. G announced, I got 4 agency calls. And I was like, where were you guys when I needed you? कोई नहीं था. Just because वो नया writer है, वो talented नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते. So why no one is there to read the script of a new writer? A writer who is raw, who is passionate, and who has some great ideas, but need a guidance. So that was the whole idea, that a scripter will read everything submitted to it, whether it is written by a person who doesn't even know film formatting.
So we read everything. And today, Scriptors has 5 teams, 5 different teams that holds 5 different work things. We have writers from more than 17 countries. We have more than 40 main active writer and a group of more than 100 other writers. So the whole idea of Scriptors is also to celebrate the writing of the writers who are not able to get their things released, but still they have a finished script in hand. It is pretty decent, and how Scriptors can actually take it further. स्क्रिप्टर्स वर्क कैसे करता है और फंक्शन कैसे करता है सबसे पहले कोई भी राइटर देयर आर टू वे अप्रोच दैट स्क्रिप्टर्स फॉलो वन इज फ्रॉम द साइड ऑफ द राइटर एंड वन इज फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोड्यूसर सो फॉर द राइटर एनी राइटर हु हैज रिटन एनीथिंग कैन सबमिट देयर स्क्रिप्ट थ्रू आवर वेबसाइट www.scriptors.org and there is a section for writers you can go there to fill the form your story also you can submit or your script also you can submit for a story it should be at least more than 10 pages for a script it should be at least more than 80 pages so that we can give a feedback and 3-4 page की story पे feedback देना बहुत ही मुश्किल है and then it goes to our feedback team. Now the feedback team is also no one else but writers. These are the writers who are working with us from a very long time. We did a very interesting course with them that how to give a feedback. Nowadays when we actually submit a feedback or give a feedback, that feedback is usually with a form and that what we are gonna share with Anand as well about Arjun Bewakoof. That form has various sections, whether it is about the story, how the larger structure is there. Then there is about the screenplay, like how every scene or the writing or the tonality of the film is working. Then it is about dialogue. Then it is also about character and their personal graphs. So overall these things, and then the last section comes to the fact where we just give, because a lot of them are writers, so they also have new ideas regarding your story only. Okay, if you try doing this, maybe this can work. So that much of detailed feedback we actually give to every script. And not only that, it has not only one person reads the script. We never believe that कि एक को पसंद नहीं आई तो वो पसंद करने लायक है ही नहीं. So every script has been actually read by minimum of 2 people. Sometimes there is another level of clearing that we do, then the third person also reads, because if someone liked it and someone disliked it, then we feel like there should be a third opinion as well. So then once this process happens, which usually take 45 days, so then the feedback actually goes back to the writer. Now there are verdicts internally. We don't share verdict with the writer, but there are verdicts internally where the writers say that कि भाई ये स्क्रिप्ट का आइडिया ही सुना हुआ बेकार है. मे बी सेकेंड इज दैट कि नहीं, आइडिया अच्छा है, लिखी अच्छी है. थर्ड इज दैट लिखी भी अच्छी है, आइडिया भी ठीक ठाक है, लेकिन स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क. एंड द फोर्थ वन इज दैट कि भाई ये लिखा अच्छा है, आइडिया भी अच्छा है, माइनर चेंजेस बट इट इज रेडी टू बी पिच्ड. तो जो रेडी टू बी पिच्ड होती हैं वो डायरेक्टली जाती है हमारी डेवलपमेंट टीम के पास, और स्पेशली इवन सेकंड कैटेगरी वाली भी हमारी डेवलपमेंट टीम के पास जाती है, व्हिच इज लाइक कि थोड़ा बहुत चेंजेस. सो व्हेन इट इज अबाउट चेंजेस, व्हाट वी डू इज दैट कि जो भी हमारा फीडबैक टीम ने फीडबैक दिया है, जो सारे फीडबैक जाते हैं, इवन इफ इट इज गेटिंग रिजेक्टेड, द फीडबैक गोज टू द राइटर. देन वी डिस्कस इट कि भाई ये है, हमें आइडिया में दम लग रहा है. इफ यू मेक योर चेंजेस एंड कम बैक विद अ फ्रेश ड्राफ्ट, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू लुक एट इट. ऑन द इफ द स्क्रिप्ट इज रेडी, देन वी ट्राई टू प्रिपेयर द राइटर. प्रिपेयर द राइटर मीन्स उसका पिच डेक रेडी होना चाहिए, उसका एक सिनॉप्सिस रेडी होना चाहिए, लॉग लाइन शुड बी पंची इनफ दैट people should pick it up. And then also we arrange a internal narration. So a lot of times what we have realized is that taking a script to someone and making them read takes a lot of more of time, क्योंकि वो जब फुर्सत होगी तब पढ़ेगा. तो रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड डूइंग दिस दैट कि राइटर का नरेशन स्किल्स भी डेवलप हो. अगर हम एक नरेशन सेटअप कर पाए तो इकट्ठे हम बहुत सारे पूरी की पूरी टीम को पढ़ा सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस. सो दैट वी स्टार्टेड डेवलपिंग, एंड वंस द राइटर इज रेडी एंड द मटेरियल इज रेडी, देन द मटेरियल गोज टू द pitch team. Now the pitch team, according to the wish list of the writer, will take it to the various production houses that we are pitching to. Currently we are pitching to 17 production houses. So majorly all the major production houses are there. But there is a big mismatch that we face. The stories that the writers are writing are not the stories which the producers are looking. Producers are looking something else and writers are writing something else, and that mismatch is something that we actually face a lot. So then that mismatch is where the other side comes, where we actually not, when we pitch the scripts to the producer, we also ask what you're looking for, or what is the next thing that is trending, what is you want to make at this point of time. Or we keep asking the directors also this.
So we get the sense of the trend, that what trend is coming. So like, for example, currently the trend is romantic films, romantic thrillers. People are wanted to watch that. According to the trend, then we pass that trend to our writers, group of writers who are already writing, already working. And we used to tell them, okay, if you're writing, for example, if the trend is a romantic film is coming and you're working on an action film, stop that action film, work on your romantic film and try to finish that off fast before the trend also fizzle off. Because hitting the script at right time is also a very important thing. कई बार producers अपने one liners के साथ आते हैं कि ये एक one liner है. If you have any writer, can you actually get it developed into 4-5 pages so that we can able to convince our bosses to make this film? So sometimes we actually do. We actually provide these writers, and sometimes it is a paid work, sometimes it is not a paid work, because you have to do it in a good faith. So that sort of a other way process also we do. We had made 2-3 times we made a writer's room according to the need of the OTTs. एक concept आया है, ये concept can you have the writers from a heartland of India or something like that. Those sort of writers who can give or contribute here. So we create a writer's room. We develop the whole Bible and then give back to the producers as well. So both side of way we try to work. We try to manage this small platform where the producers can look for the concepts and the writers can also take their concepts to a particular producer which they want to approach. The toughest part of Scriptors is that it's a pro bono organization. It's almost like an NGO. No one is getting paid at this point of time. So it's an organization which is run by writers and for the writers. So writers in a way representing themselves without any agency, which is rattling to a lot of agencies right now. But that's the whole idea is, okay, you don't need to pay someone else. You pay to an organization, and that's only also when you have to pay. You have to pay when the organization finally able to help. For example, if your script get approved through Scriptors, you get a signing amount, then you pay a 10% to the Scriptors. But if your script never get approved and we are only pitching it, you don't need to pay. And also the whole idea of getting the fund for the Scriptors made is not to make anyone rich, but also to create a fund so that we can help the new writers to actually work on the projects which no one is currently paying for. Like there is a great story where the writer is in the need of money. He has to write some bullshit TV serial to run the house. But if the money has been given from the scripters to the writer and say that you write this and you don't need to write that bullshit stuff, but you finish this. So that is how we are we are in a very early stage of that funding, but we are trying to create that fund so that it can actually start helping the new writers. In the end, I would just like to say that Scriptors is not a company. It's more of an organization that is a collective of writers who are trying to make a collective identity. A collective identity which is going to only focus on the writers and not the actually producers and actors. See, all the agencies that are working at this point of time is representing every artist. They're representing directors as well. They are representing actors as well. But what happens is when they are representing everyone, the priority may writer comes the least, and that's why they will always play the writer. They will always try to utilize them and give them the least benefit. So there should be an agency who's only focusing, or there should be an organization that is only focusing for the writers. That's what Scriptors is trying to do. Saurabh, I just want to add, that it's like when you were sharing everything, I was just thinking of my own journey and how true every single thing what you have said. And it's so this part when you say that the success of a writer, that if some writing is really big thing, finishing just 90-100 pages, even bad pages. It's not I'm talking about the good one, the bad pages. And मेरे लिए जो मतलब defining moment of my life कि I happened to reach like find out Somen Padi, and I just and I requested him to read my script, and he read the script and he gave the review and he gave just 10 pointers, and he talked about few good things, more bad things, and in the end he wrote this script is not working for me. I can't tell you, so I was so happy. This script I got to know कि सोमेन पढ़ी is saying कि this is script. तो ये जो success है ना कि चलो बुरी है पर है जो मैं लिख रहा हूँ वो script है. Correct.
तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब लिखना तो लिखे बट ये स्क्रिप्ट ही है, somebody who has written. तो मुझे लगा वो वाला स्कोल्डिंग नहीं है कि मतलब ये स्क्रिप्ट ही नहीं है. What this when you mentioning this part and I this is very very important. Right. And then all the struggles तो वो natural वाला ही है कि हमें आज लिख रहे हैं. As you mentioned that कि मेरा I one script which was that signed it got signed a big production house in 2018 अभी भी signed है. आपकी 4 फिल्में मार्केट में अटकी नहीं पड़ी हैं तो आप राइटर नहीं हैं. That has to be done because ऐसा कोई बड़ा राइटर नहीं है आज की डेट में जिससे मैं पूछूं कि आपने 2 साल में एक ही फिल्म आई है, 3 साल में एक ही फिल्म आई है, आप इतना कम लिखते हो क्या? लेकिन you will be surprised to know how much they write and how much is stuck in the market. मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लिखा है राइटर ऑफ डॉक्टर जी एंड 10 नेवर मेड फिल्म्स. I'm also the proud writer of those films as well. Whether it get made or not, I'm a proud writer of those films. And when I just spoke to you for the first time, and then I got the kind of very good validation and all, and to just get to know about you and the script, I said कि अरे सिर्फ सांस में सांस आई. Otherwise, मतलब मैंने खुद ऐसे था कि कितनी स्क्रिप्ट ऐसे लिखी है, मैंने कहा अब हिम्मत नहीं है लिख के पिच करने का. So I thought, and I got so relieved that somebody is already doing that, so you can go to that place. So yeah, you are doing God's work. There is no doubt about it. But it is tiring to do it all alone. Facing that rejection every time all alone, you need someone to come back to you and you to tell you, listen, they are not making, it's their loss, your script is good. Someone has to tell you. Yeah. Because so in the scripters, that's what we are doing. When we pick up a script and when we take that time only we give a faith. Listen, your script is good. It's whether it gets made or not, it's not in our control. Because there are 100 more factors that works on it. But your script is good and we will try everything to get it made, but that is on God's will. मुझे लगता है कि जो मेरी बेस्ट स्क्रिप्ट्स है वो तो बनी ही नहीं कभी, वो तो बनी ही नहीं. मेरी एक स्क्रिप्ट है that is so close to me, it's almost like a personal story and I think that is my best written script और अब मुझे नहीं लगता वो कभी बन भी पाए क्योंकि एक प्रोड्यूसर के पास अटक गई, उसने 2 साल रखा रहा, फिर जब तक दूसरे 2 साल रखा रहा तब तक थोड़ी एक सिमिलर स्क्रिप्ट कहीं और आ गई, वो फ्लॉप हो गई, वो दूसरी वाली फिल्म जो बन के आई वो फ्लॉप हो गई, बट आइडिया चला गया even though the script is 10 times better of the film that got made, but नहीं अब वो बननी नहीं है. हो गया उसका काम. Yeah, I know, I can understand this pain, that मतलब it's very irritating, that this the time factor and ऐसा कुछ होता है. Right. So my first question is कि do you also do documentary, like as in pitching? Pitching the documentary. In India now, documentaries pitch is a thing that is not happening as of now, in my opinion, in my understanding. Documentaries have been mounted rather than getting pitched because the makers are so limited who are ready to make a documentary. Most of the time it's independently getting made and then you later on finding a buyer for it. It's not like that you write a documentary and then you find a producer or someone who's ready to put money on it. That is not a market in India at this point of time. But there are documentary producers, very limited producers, who sometimes keep looking for the new idea. Also, how do you get in touch with them? Touch with the documentary filmmaker. Yeah, I mean, like the producers. The best way that I used to do whenever anytime wanted to approach someone from that field or that type of films is first to watch those films, go in the end, find the credits, and then do R&D. People who have made it, find out their socials, try to connect them on the social. I personally am very approachable on my socials, and that's why I believe that there are people who actually respond on the socials. Like I tried that, मतलब मैंने connect कर लिया उनसे थोड़ी बात हुई, फिर उसके बाद जब आगे मतलब मैं पूछना चाह रहा था तो फिर वो उन्होंने फिर send पे छोड़ दिया. You always need to have a plan when you approach it. Yeah. Plan can't be like you want to just show them your work. It has to be something that I have written this for you. So when I approach a producer कि ये फिल्म तो मुझे आपके साथ बनानी है, मैंने आप ही के लिए लिखी है. Whether it is liar, ये बात जो भी बोलना पड़ता है. Lot of actors, आपको पता है जब भी एक्टर्स के पास फिल्म जाती है तो सारे प्रोड्यूसर राइटर्स को बोलते हैं कि उनको बोलो कि ये आपने उन्हीं को दिमाग में रख के लिखी है, which is not true. You have to say it to all the others. Yeah. So you have to say it for the other people as well. I have seen your body of work. I think that you are the right person to make it.
Not that कि सर इसको पढ़ Yeah. लीजिए, इस पे फीडबैक दे दीजिए, आपको ये कैसा लगा, because everyone is busy and no one is here to actually revive your career. They see a value if that you whatever you are bringing on the table is a value addition in their career, then they will give you a proper. मैं एक सर से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ कैन आई स्टार्ट राइटिंग? Writing is something that you can start without help of anyone. That's the beauty of writing. Filmmaking के लिए आपको पूरा it takes a village to raise a child. And filmmaking, film is always I consider is a child. It takes a village to make a film, but it doesn't take a village to write a script. So script writing you can do at your home. I think the writing is something you don't actually need to be the creative film. You need to be original. एंड हर किसी की जिंदगी, हर किसी के आसपास वो कहानियां होती हैं जो किसी ने नहीं कही, और कहीं ना कहीं हम उनको कहानी की तरह नहीं देखते. अब मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉरी आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, बट व्हेन आई मेट माय वाइफ इन दैट कॉलेज एंड आई टोल्ड हर कि अरे ये देयर इज अ फिल्म ओवर हियर यार, एक लड़का अकेला मेडिकल कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट बन रहा है, इट्स अ स्टोरी. एंड देन शी स्टार्टेड लाफिंग, इसमें कहाँ स्टोरी है, एंड कट टू 2022 a film got made on that. So I'm saying you need to start looking around your surrounding, looking around the people around you, and be interested in them as if they are some sort of a character and they hold their story. I understand a lot of people बोलते हैं कि writing is a अकेले में बैठने वाला काम, but no good writer is an anti-social writer. हर राइटर को सोशल होना पड़ता है, क्योंकि then only you will get the real characters around you. So मेरी तीन ही एडवाइस होगी. पहला, राइटिंग के बारे में पढ़ो, स्क्रीन राइटिंग क्या होता है उसके बारे में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उसके बारे में पढ़ो. सेकंड, स्टार्ट नोटिसिंग योर सराउंडिंग, स्टार्ट नोटिसिंग पीपल अराउंड यू. एंड थर्ड, एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग, सिटिंग एटलीस्ट अ पेज एवरी डे, भले चाहे वो खराब हो, भले चाहे वो एकदम बुरा लिखा हो, लेकिन राइट. क्योंकि उससे क्या होगा कि वंस यू राइट एवरी डे यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग ऑल बाय योरसेल्फ. अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, कोई भी जैसे कि आप लिखते हो तो आप इस मार्केट को भी देख के लिखते हो या स्टार्ट में जो आपको मिल रहा है अच्छा वो लिख लेते हो? मार्केट का 1% कौन है जिसको आप जानते हो? क्या है मार्केट? क्या आप मार्केट का हिस्सा हो? हाँ. करेक्ट. तो सबसे ज्यादा तो आप अपने आपको कौन जानता है? सबसे ज्यादा आप खुद जानते, राइट? आपको कोई चीज पसंद आएगी तो मार्केट को पसंद आएगी. आप अपने लिए लिखो, आपको पसंद आनी चाहिए, आपको हंसी आनी चाहिए, आपको इमोशंस फील होने चाहिए, और ऑनेस्ट होना है. अपनी ही लिखी हुई चीज पर ऑनेस्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपनी ही लिखी हुई चीज पे ऑनेस्ट हो रहे हो तो आपको मार्केट के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद के लिए लिखने की जरूरत है. आपको पसंद आएगा तो सबको पसंद आएगा. Hi, sir. Sir, I was wondering, could you please talk a little bit about storyboarding in the context of animated films, which is not Storyboarding is a directly full-fledged art, Akansha. It needs people do courses on it. Right. Because आप अलग से कैसे सीखोगे ये मुझे नहीं पता, मगर even I am not an expert on storyboarding, though I paint, so I know storyboarding a little bit. But storyboarding is somewhere is a combination between cinematography and writing. When someone has written a scene, आपने वो scene पढ़ा और उस scene पढ़ के आपके दिमाग में जो visuals बने, उस visuals को short में आपने divide किया और वो आपने एक comics form में लिख दिया, बना दिया. That is called storyboarding. At what stage of the writing process would you say a script is ready for storyboarding? The script is ready for the storyboarding only when the script gets locked. The storyboarding should not be done before the script is locked. There is no point of doing that. It's not only in the animation films. The good directors will always do a storyboarding before going on the floor, before going to shoot. A basic storyboarding, not that detailed, but a basic story. हेलो सर. सर जैसे कि बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हो गए, वो आपको अप्रोच करते हैं कि राइटर्स को अप्रोच करते हैं कि मुझे इस एक्टर के लिए फिल्म चाहिए या इसके लिए पर्टिकुलर एक्टर के लिए फिल्म चाहिए, तो वो आप कैसे लिखते हैं? यार वो मतलब मैं लिख तो दूंगा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट यहाँ इवन इफ दिस गोज आउट एंड एवरीवन टेल्स दिस, द फिल्में जो आप एक्टर्स के लिए लिखते हो ना, वो अच्छी फिल्में नहीं होती, क्योंकि फिल्म सिर्फ कहानी सुनाने के लिए लिखी जानी चाहिए. Okay, और sir. जो आप एक्टर्स का ईगो फुलफिल करने के लिए और उनके स्टाइल पे जाकर के आप जब फिल्में लिखते हो तो वो पुअर होती है.
सॉरी यू आर एन एक्टर, यू माइट फील ऑफेंडेड विद दैट, No, sir. बट मुझे लगता है कि एक स्क्रिप्ट एक कहानी सुनाने के लिए लिखी जानी चाहिए, उसमें एक्टर फिट करनी चाहिए। मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही हो रही है प्रियांशु, जो आपने बोली ना वो बात एकदम मतलब मुझे चुभ इसलिए गई क्योंकि वो बहुत बड़ा सच है कि ऐसा ही हो रहा है कि हमारे पास प्रोड्यूसर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस एक्टर के लिए फिल्म लिख दो, लेकिन आई थिंक द बेस्ट पार्ट वुड बी कि हम एक्टर के लिए फिल्म ना लिखें, हम कहानी फिनिश करें और फिर उसमें एक्टर ढूंढें कि कौन सा एक्टर फिट होता है, तब हम शायद बेटर फिल्में बना पाए। जब भी आप किसी की बायोग्राफी या फिर किसी की कुछ भी मतलब स्टोरी को आप अपने स्टोरी में कन्वर्ट करते हो, स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हो, तो आप कैसे लिखते हो कि जैसे कि उसकी बायोग्राफी थोड़ी पंची भी लगे या फिर पब्लिक को पसंद आए ऐसी भी बनानी है? Correct. It's a good हाँ question. तो Actually. That to be यस very सर। honest, what you do is कि पहले नंबर तो रिसर्च होती है। मेरी जो अभी नेक्स्ट फिल्म जो ऑन फ्लोर गई है मनोज वाजपेयी सर की, वो भी एक रियल पर्सन की लाइफ पर बेस्ड है। तो वी ट्राई टू डू अ रिसर्च ऑन दैट पर्सन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। वी ट्राई टू टॉक टू एवरीवन हु इज रिलेटेड टू दैट पर्सन, ऑल द आर्टिकल्स, एवरीथिंग। इट रिसर्च टुक अस एन अ ईयर, एक पूरा साल लगा हमें यस। रिसर्च करने में। लेकिन फिर क्या होता है कि इवेंचुअली आपके दिमाग में ही ना कुछ मोमेंट्स रुकने लग जाते हैं, यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज थी इनकी जो लाइफ में हुई, या वो बहुत जबरदस्त चीज थी जो उनकी लाइफ में हुई। एंड देन यू स्टार्ट nitpicking the things that are interesting, that people might like, that you are liking also। पहले तो आपको पसंद आ रही है इसलिए आपको लग रहा है कि शायद लोगों को भी पसंद आएगी, तो वो फिर आप उनको एक धागे में पिरोना शुरू करते हो। फॉर राइटिंग अ बायोपिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दैट थ्रेड। इफ यू ट्राई टेलिंग एवरीथिंग ऑफ अ पर्सन्स लाइफ इन अ फिल्म, इट विल बिकम वेरी एपिसोडिक, विल बिकम, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी में एक ही चीज नहीं होती है, फिर वो अलग अलग उस तरीके से बन जाएगी, एपिसोड्स की जैसी बन जाएगी। तो एक धागे में पिरोना बहुत जरूरी है, वो आपको ढूंढना पड़ता है वो धागा, देन ओनली यू कैन राइट अ गुड बायोपिक। पहला क्वेश्चन ये है कि आप किस पैरामीटर में जज करते हैं कि कोई स्क्रिप्ट अच्छा है नहीं अच्छा है, वो प्रोड्यूसर को पिच किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वो पैरामीटर्स के बारे में बताएं। जो पैरामीटर्स है ना वो दो तरीके के होते हैं। पहला पैरामीटर ये होता है कि स्क्रिप्ट अच्छी है कि नहीं, और उसमें हम लोग ये नहीं देखते कि भाई ये किस प्रोड्यूसर के पास जाएगी या किसको पसंद आएगी, उसमें हम ये देखते कि कहानी नई है कि नहीं, ये पहले सुनाई जा चुकी है या नहीं। अगर ये कहानी पहले सुनाई जा चुकी है तो भी हम रिजेक्ट नहीं करते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये अलग तरीके से सुनाई जा रही है। तो पहले तो नई है कि नहीं, नई अगर नहीं है तो नई तरीके से सुनाई जा रही है या नहीं, और तीसरी चीज ये कि क्या इसके कैरेक्टर्स वो कोई भी इमोशन आपके अंदर जगा पा रहे हैं या नहीं। अगर रुलाना चाहते तो क्या ये रुला पा रहे हैं, डराना चाहते तो क्या ये डरा पा रहे हैं, हंसाना चाहते तो क्या ये हंसा पा रहे हैं, वो इमोशंस निकल के फील होने चाहिए। इन सब चीजों के अलावा स्ट्रक्चर, फिल्म की कहानी का एक स्ट्रक्चर होता है, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, वो कितना अच्छी तरीके से वीव किया गया होता है, यही पैरामीटर। Hi, sir. My question was that sometimes directors might need a change in your script, which you as a writer would not like. So in that case, do they ask you before making the changes, or if you don't agree, do they what happens after that? Is there a conflict, or the director does what he wants? Director always want to make changes. A good director will always discuss it with you first. They do. Either you try to convince them or either they will try to convince you. I always feel one thing that as a writer, you always need to put your script above than you। तो क्या होता है, हमने जो लिखा है हमें लगता है वही बेस्ट है स्क्रिप्ट के लिए, हमने जो लिखा है वही सही है, लेकिन द ट्रुथ इज दैट कि कभी कभी जो सामने वाला बोल रहा है ना वो एक्चुअली स्क्रिप्ट के लिए बेटर होता है, क्योंकि आप वो चीज नहीं देख पा रहे हो। लेकिन ये थोड़ा टाइम लगता है, मुझे लगता है विद द एक्सपीरियंस यू स्टार्टेड टू रियलाइज दैट कि सामने वाला कमी नहीं बता रहा है, सामने वाला भी बेटर चाहता है, क्योंकि वो भी डायरेक्टर है, वो भी तो ये नहीं चाहेगा कि फिल्म खराब हो जाए, राइट। बट देयर आर चांसेस वेयर यू फील दैट कि ही इज डूइंग रॉन्ग, एंड एट दैट दोस कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट यू नीड टू पुट योर पॉइंट स्ट्रांगली, बट नॉट विद दिस कि नहीं मुझे लगता है इसीलिए सही है। That could not be the logic, that could not be the reason. You have to give the reason according to the need of the character in your script and need of the tonality of your script. It should be backed with the logics. It can't be just कि मैं बोल रहा हूँ सर ये ऐसा होना चाहिए इसलिए ऐसा होना चाहिए।
सर मुझे मेरे जो सीनियर्स हैं जो ड्रामेटिक सोसाइटी में भी है मेरे बैचमेट्स वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी राइटिंग बहुत रेबेलियस है। वो चीज तुम्हारी राइटिंग में दिखती है, चाहे वो एथिज्म के ऊपर हो या फिर वो जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर हो या पॉलिटिकल सटायर्स क्यों ना हो, तो बहुत ज्यादा रेबेल हो तुम, वो चीज दिखती है। तो अपने करियर को स्टेबल करने के लिए इनिशियली से थोड़ा सा काम डाउन, तो यही मेरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई डू, क्योंकि मुझसे वो शांत रहना होता नहीं है। डोंट काम डाउन बिकॉज दैट्स योर वॉइस। आप कोई बात ही नहीं कहना चाहते, आप सिर्फ वो कह रहे हो जो दूसरे लोगों को पसंद आ रहा है, तो आपके में कोई वॉइस नहीं है। आपकी राइटिंग फिर विल बिकम द राइटिंग ऑफ एवरीवन एल्स, यू वोंट स्टैंड आउट। अभी वो लोग नोटिस ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट स्टैंड्स आउट। एंड नाउ इफ यू स्टार्ट स्टॉपिंग दैट, तब आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, पढ़ के निकल लेगा। वो बोल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इट स्टैंड्स आउट। So don't calm yourself down. But when it comes to the filmmaking, I would say tell your thing, be rebellious, but be rebellious in the world of the story that you're creating. If you're creating a story like, for example, बहुत ही छोटा सा example देता हूँ. There was a movie called Dum Laga Ke Aisha, Bhumi Pednekar's first film. And in that film, Bhumi Pednekar comes and just slaps Ayushmann Khurrana's character. She slaps क्योंकि वो उसे मोटी बोलते हैं. That is a rebel. In that world, क्योंकि वो बहुत छोटा गांव है, बहुत छोटा शहर है, उस छोटे शहर में एक लड़की का थप्पड़ मार देना अपने पति को सबके सामने इज अ रेबल। वहां वो खड़े होकर शायद भाषण नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो थप्पड़ मार के निकल जाएंगे। So when you write a fiction, you need to write it according to the world that you are creating and according to the characters. वहां पर आप भाषण नहीं दे सकते। Very well said. I quite liked it. Like, be rebel in the world you have created by your own writing, and it shows off as your inner self as well. Right. It becomes true to your personality. Wow, Yeah. great. How to make films which are festival ready, like instead of commercial cinema? Is there any way of writing which makes a film festival winning? 2-3 things about the festivals that I would like to say is that one, all the festival films tries to say something that hasn't been said before. आप वापस वही कहानी नहीं सुना सकते जो 10 बार सुनाई जा चुकी है, वो कुछ नया बोलना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्रेव। फेस्टिवल फिल्म हमेशा ब्रेव होती है, वो कोई भी बात कहने से पीछे नहीं हटती है। वो जो बात कहने की कोशिश कर रही होती है वो किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, डजंट मैटर, लेकिन वो फिर भी कहती है। तो ब्रेव होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, ओरिजिनल इन दी राइटिंग। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कोई फिल्म देख करके एक फिल्म की कहानी लिख दी है, जो आजकल के राइटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, व्हिच आई ऑलवेज टेल द न्यू राइटर्स। अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन किसी और फिल्म को मत बनाओ, अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अपने आसपास के लोगों, अपने आसपास की दुनिया को ही बनाओ, देन यू विल राइट रियल ओरिजिनल स्टोरीज। Yeah, hi Saurabh. Hi, So Shiva. my question to you is, suppose I'm pitching a film to a production house, okay, and suppose they purchased it, but they are not making it. So I mean, फिर क्या करना चाहिए मुझे? तो सबसे पहले जब भी आप साइन करें ना, this is the biggest problem that I have faced in my life, and now I fight very hard on it. There is a thing called, in your legal thing, it's called buyback option. So whenever you are signing your script, see whether it has a buyback option. Now buyback option क्या कहता है कि 2 साल 3 साल के अंदर अगर प्रोड्यूसर इसको ऑन फ्लोर नहीं ला पाता है या फिल्म बनने के पास नहीं आ पाती है, तो राइटर के पास राइट होगा कि वो ये फिल्म राइट प्रोड्यूसर से वापस खरीद ले। ट्रिक ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब उनसे खरीदने जाओगे, आपको लगेगा कि अरे चलो उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे, मैं इनको 10 लाख रुपए वापस कर देता हूँ, जितने भी उन्होंने जब तक पे किए होंगे उतने वापस कर देता हूँ, और वो आपको स्क्रिप्ट दे देंगे। पर ऐसा नहीं, बायबैक ऑप्शन में वो बहुत सारी चीजें जोड़ते हैं। वो ये भी जोड़ते हैं कि उन्होंने अपने एंड पे क्या क्या खर्चा किया है। अगर उन्होंने एक लीगल वाले लॉयर को हायर करके आपका एग्रीमेंट बनाया होगा जिसने 10,000 रुपए लिए होंगे, वो भी जोड़ेंगे उसमें। उसके अलावा उन्होंने अगर एक डायलॉग राइटर भी हायर कर लिया है जिसको उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं, वो भी जोड़ेंगे इसमें। उसके अलावा अगर डायरेक्टर और राइटर जाकर के लोनावला में बैठ करके 2 महीने एक रिट्रीट पे बैठ करके अपने राइटिंग की है, वो रिट्रीट का बिल भी आपके में जोड़ेंगे। तो दे विल एड एवरीथिंग इन द बायबैक टू मेक यू नॉट बायबैक। तो उसका भी लीगल तरीका ये है कि जब आप बायबैक लिखवाओ तो इट हैज टू बी क्लियर कट मेंशन कि भाई बायबैक में राइटर वही पैसे वापस करेगा जो उसको दिए गए हैं बस। So 90% of the producers will reject this option. You have to fight. There's no other way. Yeah, thank you.
I wanted to ask an additional question with related to this. So, while pitching, suppose I have pitched something and I got a contract from the director or the producer. So, will you also help me in decoding the contract and Of maybe course, there's a modifying team. the points? Yeah. Yeah. We have a team Okay. of lawyers that we hire on only on the base. So they're on the project basis. So we get them on board whenever we reach to the point where there is an agreement. But is there any chance that I can join your organization? You can join our organization very easily, but first submit something. मतलब कहने का ये कि once you submit, it goes to the feedback team. The feedback team will read it, and on the basis of what you have written, our teams will connect with you. And we don't only connect for the script; we connect with the person as well. So the writer is good. Then we try to even approach to the writer to attach the writer in our writers database. Once the person gets joined, we also invite people to become the part of the admin of the whole Scriptors, because again, Scriptors is not a paid organization and we need more and more hands and more people to run this organization, especially writers. I would like to know how many scripts are you seeing that are just based on AI writing, and has it been annoying? The scripts are not based on AI writing. Sure. The writing is based on AI. तो आई वुड से कि आइडियाज तो फिर भी ओरिजिनल हैं, लेकिन उन्हें लिखवाया एआई से है। Okay. और वो पहले नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब जितना ज्यादा आप पढ़ते जा रहे हो, जितना देख रहे हो, उतना आपको समझ में आता जा रहा है। So I won't suggest कि मत यूज करो चैट जीपीटी और मत यूज करो एआई, बट इवन इफ यू यूज इट इन अ वे दैट योर वॉइस इज स्टिल विजिबल अमंग द वॉइस ऑफ द चैट जीपीटी। आप उसको उससे एक ड्राफ्ट लिखवा लो, लेकिन उसके बाद उस ड्राफ्ट में अपनी भाषा, अपना बोलने का तरीका, अपनी राइटिंग की स्टाइल डालो, सो दैट कल के दिन अगर सौरभ भेज रहा है तो वहां पर कोई उसको लगे कि हाँ ये सौरभ ऐसा ही लिखता है, उनको ये ना लगे कि ये तो चैट जीपीटी से भेज दिया। Thank you so much for answering that question. My small question is that currently लोगों का attention span बहुत कम हो गया है। लोगों ने movies देखना बहुत कम कर दिया है, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं, वो भी शॉर्ट फिल्म्स बहुत जो पॉपुलर हो जाती है सिर्फ वही देखते हैं, कोई ब्राउज नहीं करता शॉर्ट फिल्म्स को। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बिगिनर अगर रील्स बनाना शुरू करे, अपनी स्क्रिप्ट को छोटे से टुकड़े में 1 मिनट में 1.5 मिनट में ले आए, एक वर्टिकल फ्रेम में अपनी पहचान बनाने के लिए, दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन, और डू यू थिंक क्रिएटिविटी मर जाएगी उससे? नहीं, that's a good option. See, any medium is a good option to tell the story. And this is happening. It's called micro drama. And people are making it. A lot of influencers these days are making micro drama. They are even putting money. Even scripters are getting call के भाई आपके यहाँ writers हैं जो micro dramas लिख सकते हैं. Micro drama is nothing but a longer story breakdown in 20-30 parts, and every part is 2 minutes long. But the problem in that writing is that it is even more challenging, because after every 2 minutes you have to give that hook so that the people will scroll to the next reel. But sir, आपको recommend फिर me दी one जाती of है, मतलब और like those 3-4 conflicting points, your favorite films, Indian and like world cinema. a separation. A separation, okay. Yeah. Then Parasite. Okay, Parasite, yeah. Everything Everywhere All at Once. Like Father Like Son. And Maharaja. Maharaja, okay. And Kahani, Andhadhund. And in the older films, I really love Anand and Guide. I know younger generation don't watch older films, but these are the just films. Jewel Thief, one of the best written suspense thriller ever in India. All Rishikesh Mukherjee, all, like not a single bad film that person has made. And all of them are entertaining. They're not boring. Okay, thank you, sir. I want to tell you something. क्या होता है कि आजकल, because we all are filmmakers and we are all are writers, and we always try to watch things in a very like a critical manner. यहाँ ये हुआ था, वहाँ वो हुआ था. Please don't do that. You're spoiling the film. You're spoiling your own experience. You're stopping yourself from feeling the film. When I try to watch a film, I try to watch it that I'm nobody. I just want to enjoy this film. I just want to feel the emotion that the director wants me to feel. Even if it is a crass joke, but it is making me laugh, I will laugh at it. Later on, I can analyze, but I will let myself flow with the film. That will also make you understand who you are as an audience. And that's why you will also understand your relationship with the audience.
Hi, sir. I wanted to ask whenever I write a script, either I love it too much to face criticism or I hate it too much to see any improvement. And I'm in this mindset for a very long time. How do I get out of it? तो क्रिटिसिज्म का पहला रूल, या क्रिटिसिज्म इज अ रॉन्ग वर्ड, आई ऑलवेज ट्राई टू टेल पीपल जस्ट से इट इज अ रिव्यू, फीडबैक. क्रिटिसिज्म थोड़ा हमारे दिमाग में नेगेटिव वो डाल देता है कॉनोटेशन कि अरे क्रिटिसाइज कर रहा है कोई, हमें बुराइयां निकाल रहा है. बट ऑलवेज कंसिडर इट एज अ फीडबैक. फीडबैक कुछ टर्म है कि आपको कोई कुछ बता रहा है, उसको कैसा लगा, आप उसे मानो या ना मानो. पहली चीज तो ये होती है कि सुनना शुरू. एक पहले आपके जो आप फेज में हो ना, वो मेरे साथ हुआ था. और डॉक्टर जी की शुरुआत की राइटिंग के टाइम में होता था, एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी पम्प्ड अप. अरे ऐसा थोड़ी ना, तुमको नहीं पता है, तुम थोड़ी ना मेडिकल फील्ड से हो, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मुझे पता है, ऐसे ही होता है, ये है वो है. बट देन थैंक्स टू वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, हिज नेम इज प्रवेश गुरु, ही इज अ एसोसिएट डायरेक्टर इन धर्मा, एंड he made me understand that ke Saurabh, first of all, if anyone has read your material or seen your material and is trying to tell you something, don't cut him, क्योंकि फिर वो आपको बताना बंद करता है. दैट्स अ बैड. If people are reading and then telling you कि भाई ये ऐसा है या ऐसा है, be very grateful to them. And the first step of being very grateful is कि listen to them. Even if you disagree, don't cut at that particular point of time. Don't even agree to them. Agree होने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन don't disagree. Listen, अच्छा, this is what you think. Okay, okay. And what else? Always ask what else. Always ask what more you think of it, what you like, and then change your questions. Okay, this is what you dislike. Is there anything that you like about it? So then you will try to balance out the POV. कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे मेरी राइटिंग में लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं फिल्म के एंड, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, एंड तो इतना अच्छा लिखा हुआ है, एंड में तो प्रॉब्लम है नहीं. लेकिन एज अ गुड राइटर यू विल ऑलवेज फाइंड कि सॉल्यूशन एक्चुअली स्टार्ट में है, फिल्म के सेटअप में, एक्ट 1 में. तो टेकिंग और अंडरस्टैंडिंग अ क्रिटिसिज्म और फीडबैक इज आल्सो एन आर्ट दैट यू डेवलप only with the time. And the first step is just start listen and don't listen to react. सुनो but बोलो मत उसके बाद, सुन लो. Thank you, sir. Saurabh, Okay, please Bhavesh. recommend some YouTube channel or some videos that or podcast you saw and that it is good for writing, or if I want to start writing, so we have to see. There is this website, pandemonium.inc. It is actually a website developed by a Oscar-winning writer of Little Miss Sunshine. And also Little Miss Sunshine is also, please add to the list. It's one of my favorite films. So he has also written some animation films as well, and he's an Academy Award-winning writer. He has set up that website. It has very interesting tools about script writing, the mistakes that we make. It has very interesting videos as well. There are a lot of graphs that he has made to understand the thing. Just explore that website as much as you can. But before exploring the website, you need to watch certain films so that you can understand the references that this person is giving. So watch those films, what he's talking about, and then figure out. मतलब चार्ट डालो वो वेबसाइट, वो बहुत जबरदस्त वेबसाइट है. Able to talk about Arjun Bewakoof. I just want to summarize and say it is one of the most entertaining script I have read in the recent time. It was so on the edge. थोड़ा शुरुआत के सेटअप से मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा, I mean the cold open was amazing, but then the from cold open to a certain point I felt where this is going. But when it starts, it doesn't stop. Then I'm a writer who guessed even the most complicated of the scripts on the screen. I wasn't able to guess the ending. this was, oh my god, ये तो और क्या takeaway है with the title itself, Arjun Bewakoof, but Arjun Bewakoof नहीं है. ये तो Thank you. I really loved it. I mean, there are some points, very small point, वो भी nitpicking है. Those are things are very nitpicking in the sense that कि ठीक है, आनंद ने बोला है कि थोड़ा review दो, इसलिए review दे देते हैं. मतलब वो वाला point है. But I really enjoyed, and dialogues are something that I felt that Yeah, it's not even done. So अभी dialogue वो मुझे बस फील हुआ, बट वो मुझे समझ में आ गया था कि इट्स नॉट डन, वो उस पे काम अभी होगा. बट स्क्रिप्ट तो जबरदस्त है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर अ पॉइंट आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक आई एम वाचिंग अंधाधुन, like Andhadhun the 2 or something like that. Yeah, and very visual also. Very visual. The writing is very visual. Thank you, Saurabh. And thank you, Saurabh. I have learned so much
in today's session as if their questions were just, there were a lot of reflections. And personally, it was very, very insightful for me, and I'm sure for everyone. And we asked for 1 hour, you gave almost 2 hours. So, Yeah, oh yes. superb, yeah. No, but I enjoyed as well. Thank you, Kajal, for being a wonderful host. Yes. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you. See you soon.